नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड है KCl, सेकंड है PH3O2 B2H6S2SO4। तो पहले सारे कंपाउंड्स में बॉन्डिंग चेक करते हैं हम। क्लियर। तो KCl, ये तो सिंपली क्लियर है कि KCl में कोई भी कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है, इसमें सिर्फ आयनिक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? पोटेशियम में होते हैं हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, चेक कर लेते हैं एक बार टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 2 4 4 6 10 12 12 एंड 6 18, और यहाँ पे आएगा 4s1, क्योंकि 19 इलेक्ट्रॉन ही हमें फिल करना है, तो ये होगा 4s1। तो ये थी इसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये हो जाएगी 3p6 4s1, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो p सबशेल है वो कम्प्लीटली फिल है, और s में एक इलेक्ट्रॉन के रिक्वायरमेंट है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, तो जो पोटेशियम है वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? K पॉजिटिव। क्लियर, क्योंकि वो s का आउटर मोस्ट 4s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह Cl जो है, Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 17, तो Cl को अपना 3p में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको p सबसेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो क्लोरीन को टोटली एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और पोटेशियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो इस तरीके से बनती है कि पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और K पॉजिटिव की फॉर्मेशन करता है। इसी तरह जो Cl है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन करता है, मतलब इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। क्लियर, तो KCl में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि इनमें से कौन से कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है, तो KCl तो कंफर्म हो गया। अब हम चेक करते हैं PH3O2 B2H6 इस तरीके से। तो PH3 की अगर मैं बॉन्डिंग बनाती हूँ तो PH3 में ये फॉस्फोरस सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये कौन सी बॉन्डिंग है? कोवेलेंट। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है। इसी तरह जो नेक्स्ट कंपाउंड था हमारा B2H6, अगर उसमें मैं बॉन्डिंग शो करूं तो ये सेंटर्ड हाइड्रोजन्स हैं, एंड पोजीशन वाले हाइड्रोजन्स। यहाँ पे ये बनाना बॉन्डिंग होती है इसमें B2H6 में। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हम कहते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं बनाना बॉन्डिंग। लेकिन इसमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ये बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्लियर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा H2SO4, अगर इसमें मैं बॉन्डिंग शो करती हूँ तो ये सल्फर से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है, यहाँ पे आएगा OH, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है, यहाँ पे आएगा OH। ये बॉन्डिंग होती है H2SO4 की, तो इसमें भी हम कौन सी बॉन्डिंग देख रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्लियर। इसी तरह अगर O2 का डायग्राम हम लेते हैं तो इसमें भी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो सिर्फ KCl एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, तो फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। Hello students, let's start the question. The intermolecular interaction that is dependent on the inverse Q of distance between the molecules is the intermolecular interaction, which means the interaction between any two molecules. Okay. Now we have been given 4 interactions right over here. Okay. The very first one talks about ion dipole interaction. Okay. So an ion dipole interaction would be the one like NaCl mixed up in water. Okay. So when in a beaker we imagine that
sodium chloride, that salt, has been added, the interaction seems to be an ion dipole one. Why? Ions are your Na plus and Cl minus, yes, and H2O, it's a dipole. So you can see the dipoles over here. So here's a slight negative charge on the electronegative oxygen, whereas a slight positive charge on the hydrogens. Now basically there is the birth of an ion dipole interaction wherein Cl minus interacts with the slight positive H plus, whereas Na plus has an interaction with the slight negative O minus. Yes. So this interaction is seen throughout that salty solution which is contained in the beaker, which would be termed as ion dipole interaction. Now, coming to the Coulomb's law expression which we could use over here, the ion dipole interaction shows that it is going to be indicated as the product of the charges. Yes. So supposedly if it was the interaction which we are talking about, yes, the force which we are going to talk about, that's the attractive force. So that would be twice of the product of the charges, okay, upon 4 pi epsilon r cube. Yes, this would be your ion dipole interaction. Whereas the next one, which is called as the London force. Now, London force is also known by another name, and that's the dispersion force. Dispersion force or dispersion forces are known as the weakest of all forces. Yes, the weakest of all, and you could see that many number of interactions are there which we take into consideration. In fact, you talk about the summation of the instantaneous moments or dipole moments which we would be summing up, which give me the whose magnitude gives me the magnitude of the dispersion forces. So these are the weakest of all, okay, the weakest of van der Waals forces, you could say. Those are your dispersion forces. Now, due to these weaker interactions, we have the relation, or otherwise the interaction, to be directly proportional to the 6th root of the distance between the molecules or between the species which are interacting. Okay, so they are so weak. I mean, you can understand this, that it's r raised to 1 upon r raised to 6 means it's quite far away. Yeah. Now, moving on to the hydrogen bond. Okay. Now, hydrogen bond is again a part of your dipole interaction. Okay, what is it? It's a part of a dipole interaction, we would say. Okay, now why a dipole interaction? Because if at all we were imagining hydrogen bonding, now this one is actually a hydrogen bonding which has been seen over here. What is hydrogen bonding? It's simply the interaction of hydrogen with an electronegative oxygen, okay, or an electronegative element, I mean to say. Okay, here it was with oxygen in water molecule, but it could be with any other negative element. So supposedly if I have an interaction in this manner, that suppose I have ammonia molecule. Yes, this is my ammonia molecule with a lone pair of electrons. Yes. So over here, definitely we have a slight negative charge more on the electronegative oxygen, whereas slight positive charge more on your electropositive hydrogen. And if at all I manage it to mix up with water, so these are the two dipoles which we can see, isn't it? Yes. So these two dipoles are going to show me an interaction. Interaction of what? So I would be having the interaction of this H plus with O minus, whereas this H plus with N minus. Yes, and hence this particular interaction would be termed as hydrogen bonding. Yeah. Now this hydrogen bonding interaction, or the dipole interaction, has been found to show
directly proportional to the cube root or inverse cube of the distance between them. Quite similar to your ion-dipole interaction. Yes. And what about ion-ion interaction? Now an ion-ion interaction is like your ionic bonding. Yes. And over there definitely you would be having a closer interaction. Yes. And hence here it would be directly proportional to 1 upon r square. Quite simple enough, isn't it? Yes. Now let us focus on this. Both of these are inverse cubes. So let us compare their magnitudes. Now if at all I was to lay down the Coulomb's law expression for ion dipole, it would be indicated as it has been given over here, and that's 4 pi epsilon cube, r cube. Yes. So this is for your ion. Oh, I'm sorry, this went a little way. Let me write it once again. Yeah. So this is going to be your ion dipole interaction. Okay. Whereas for a dipole interaction, okay, the distance would be quite greater. Yeah. So due to which over there, the product of the charges would be depending upon the electronegativity differences between the interacting species. So over there, as a result of a series of species which have been considered for an experimental evidence, it has been found that this magnitude would be given as 2q square r minus 4q square r, yes, divided by 4 pi epsilon r cube. What is this for? I said this is for dipole interaction. Yes, okay. Now due to the laying down of these two equations, it's pretty clear now that obviously the ion dipole is a very higher one, okay, as compared to your dipole one, isn't it? Yes. So in that case, in fact not higher I would say, but it is a better interaction as compared to your dipole one. Yes. Why? Because the strength of the interaction depends upon what? The magnitude of the dipole moment, okay, and the size of the molecule, the charge and size of the ion. And ion dipole is definitely a better one as compared to dipole, isn't it? Yes. Hence we can say that an ion dipole interaction would be the correct one to be marked as being dependent upon the inverse cube of distance. So in that case, I'm marking ion dipole interaction as the correct answer, which is there in option number 1. I hope you understood the explanation. Thank you.